Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. Now, here see the students. It is said that fire is a good servant but a bad master. It means that if we are going to use fire carefully, then it is a good servant. But if we are not going to use in a carefully manner, if we use carelessly, then it harms us. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on other hand, if fire gets out of control, if we can, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed, and hundreds of people were killed or injured. Now, see, fire is used to cook the food. Fire is used to cook the food. It also helps us in winter to warm us, and even fire is used to generate to make electricity. This is the good servant. Now see the bad master. Now fire, every year thousands of people died, even many homes and shops are burnt by the fire. After Diwali, you see, students, many homes, due to the crackers, or we can say due to the carelessness, many people lost their lives. And even in jungles, due to extreme heat, due to extreme heat, there is a forest fire, and in that forest fire, बच्चों, आग को देखो कहा जाता है कि एक अच्छा टीचर भी है और ख़राब टीचर भी, क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छा नौकर होगा, और अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब साबित होगा। तो इसीलिए हमें आग को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, ना कि ऐसे बस माचिस ले ली या कैंडल ले लिया और पेपर जलाने बैठ गए। क्योंकि अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन हमारे लिए बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए इसे हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है, ना कि ऐसे ही मजाक में चलाना है। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each of the three things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on. Burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put off or smothered away with a damp blanket or a sack
This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. Third way of putting out a fire is to remain the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. They blew on a burning matchstick or a candle to put out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature before the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. Now see here the three ways are there to put out the fire. Now see, suppose students, if we are not going to provide the fuel, the fire can be easily put off. Second is there, if we are not going to allow to pass the oxygen, then also the fire can be easily put off. The third is, if we lower down the temperature of that area where the fire is taken place, then also it can be put off. Now see, अगर बच्चों हम तीन तरह से आग को बुझा सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने आग जलाई है और अभी हमें आग बंद करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ईंधन ही नहीं डालेंगे. ईंधन मतलब जैसे लकड़ी नहीं डालेंगे, पेपर नहीं डालेंगे, कपड़ा नहीं डालेंगे, तो अपने आप आग बंद हो जाएगी. दूसरा है कि अगर थोड़ी सी आग लगी हुई है तो उसके ऊपर हम बोरी या तो कंबल जैसा थिक कपड़ा डाल देंगे तो आग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उस तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा. तो आग अपने आप इस तरह से बंद हो सकती है. और तीसरा है कि जैसे अगर हम उस आग के ऊपर थोड़ी सी आग लगी है तो हम पानी डाल देंगे या मिट्टी की बकेट भर भर के, बाल्टियाँ भर भर के डाल देंगे तो भी आग इजीली बुझ जाती है. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट with water. If to spray onto oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This may cause very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading fire. Water should also not be used on fire catching by electrical appliance. The person may spraying water might receive an electric shock and be killed. Carbon dioxide extinguisher is the best thing to put to fight an electric fire. Now see students, if the fire is caught by an oil like edible oil, kerosene, petrol, diesel, so we should not use the water. If we are going to use the water, the oil float on the water, and if water spreads, and when the water spreads, the fire is also going to be spread. Instead of putting off the fire, we are going to burn the fire, covering the more and more area. So see students, when fire is caught by the oil, any oil, don't put the water. And even electricity, when fire is caught by the short circuit, clear, that time if the fire is caught, so at that time also don't use the water, because water electricity passes. So when the electricity pass through that water, the person may die. So please don't use the water. Instead of using water, you can use the carbon dioxide extinguisher. Carbon dioxide is the best to put off the इलेक्ट्रिक फायर. बच्चों देखो, कभी भी आग अगर तेल से लगती है, कोई भी तेल हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, अगर हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा आप देखोगे अगर आप तेल में पानी मिक्स करोगे
तो पानी के ऊपर ही तेल होता है, तो इसी तरह आग और भी फैल जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको पानी नहीं डालना। उससे बेस्ट है कि मिट्टी की बाल्टी भर के डाल दो, या कोई मोटा कपड़ा है तो डाल दो, तो उससे आग बुझ सकती है। और दूसरा, एक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से कभी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है, उस टाइम भी आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी डालोगे तो आपको करंट लग सकता है, और करंट लगने से कभी इंसान की जान भी चली जाती है। इसीलिए आपको सबसे बेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड आपको यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो कि आजकल हम हर बिल्डिंग में, स्कूल में पाए जाते हैं। सिलेंडर लगे होते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी। तो उससे से ही हमको आग को बुझाना है, सबसे बेस्ट तरीका वही है। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, व्हेन फायर ब्रोक आउट everybody become a firefighter. People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Now see, in the olden days there were no firemen. Every people itself become a fireman. Everybody, every human being, they make a human chain and they pass on the bucket filled with water from the pond or a well. This way they used to put off the fire. अब देखो, पुराने ज़माने में और आज भी कभी कभार ऐसे होता है कि थोड़ी सी आग लग जाती है, तो इंसान क्या करता है, हम लोग एक चेन बना लेते हैं और एक एक इंसान बकेट भरता है और वो पास ऑन करते जाता है, और इस तरह से हम अपनी आग बुझा लेते हैं। नाउ देयर आर लॉज about building construction which ensure space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, more ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with the special equipment known as fire brigades are there to put out fire. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. Now see, nowadays special trainings are given for the firefighters. When any building is caught fired or any place, we immediately give a call and the fire brigades come and they put off the fires. And nowadays the government has passed a law that every building should follow the laws. There should be a gap between the between the buildings, and especially fire extinguishers are there. So this way many preventions are taken to control the fires. आज देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉस बना रखे हैं कि बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, 2 बिल्डिंगों के बीच में गैप होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आजकल स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है फायर ब्रिगेड्स को, जो कि फायरमैन होते हैं उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें अगर बिल्डिंग में, मॉल में, किसी भी जगह पे आग लगी है तो किस तरह से हमें आग को बुझाना है, और अगर कुछ लोग फंसे हैं तो उन्हें किस तरह से निकालना है। तो वो अपनी टेक्निक से लोगों की जान भी बचाते हैं और आग को भी बुझा देते हैं। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burning from the effects of smoke. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. Now see, the discovery of fire
help us in many ways, many ways. So still at present, many people around the world, they worship the fire as a god. And it is said that when we are going to use the fire in a proper manner, so it is a very good friend, or we can say it's a very good servant. But once we use it roughly, so it become a dangerous enemy. It become a dangerous enemy. And the fire people, firemen, fire brigade person, they even put the bandages to the people. अब देखो बच्चों, आग को कई जगहों पे दुनिया में उसे एक भगवान के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि आग हमारे बहुत सारे कामों में आती है, अच्छे कामों में आती है। वो तो हमारे ऊपर ही है, अगर हम उसे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो एक हमारे लिए अच्छा फ्रेंड बन सकता है, एक अच्छा हमारा नौकर बन सकता है। लेकिन जब हमें उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक हमारे लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है कि वो बड़ा दुश्मन हमारा बन सकता है। इसीलिए नेचर के साथ हमें कभी भी खेलना नहीं है, ना ही उससे मजाक करनी है। तो हमें जो भी भगवान ने नेचर से चीज़ मिली है उसका हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। इससे बच्चों हमारा लेसन अब मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ, और इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।